guys, this is Sheetal Khatri and welcome back to my channel again. And yes, I'm back again. And this time I've brought a topic of 10 types of toxic people you should completely avoid. Okay, and फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ वो मैंने आइदर नोटिस की हैं या तो फिर जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, जो मैं खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ. सो इट बेसिकली कम्स आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस और दैट काइंड ऑफ स्टफ. सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ. एंड इसलिए मैंने लिस्ट बनाया है 10 टाइप्स ऑफ टॉक्सिक पीपल जिसको आपको कम्प्लीटली अपनी लाइफ से अवॉइड करना चाहिए. एंड अगर आपको नहीं पता कि टॉक्सिक क्या होता है, सो टॉक्सिक पीपल आर लाइक वो लोग होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते, जो लाइक हानिकारक. टॉक्सिक मतलब हानिकारक, जो आपके लिए बहुत हानिकारक हैं. सो देयर आपको ऐसे बहुत के टाइप के लोग मिलेंगे जो आपके लिए या फिर इवन आपकी लाइफ में आप दूसरों की लाइक इवन दे आर नॉट गुड फॉर योर फैमिली, दे आर नॉट गुड फॉर यू, दे आर नॉट गुड फॉर योर फ्रेंड्स. लाइक some are people who just they have very bad vibes and they just are try to hurt you in some way or the other. So this is something जो आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए अपनी लाइफ में. सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं I just come up with a list and share with you people. Okay, and yes, see, I just from a last DIY I just wore this hairband and it's looking pretty cute, isn't it? Okay, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो I will just link somewhere in the card and in description box as well. Okay, so आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है. And can you imagine, I just made this in just ₹10. I was like, wow, इसका फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है comparatively. Okay, so now let's just directly jumping into the topic. Okay, so first kind of toxic people are manipulators. Okay, like they have hidden motives behind keeping relations with you. Like उनके मोटिव के अलावा वो कोई रिलेशनशिप रखते ही नहीं है. लाइक दे हैव दैट कैपेसिटी कि सच को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करना. एंड those people are so good in manipulation that they would literally be able to make you feel bad for something you haven't even done. So ऐसे लोग होते हैं जो बहुत they are very sharp. Like they can literally any single topic into such a complicated issue and blame everything on others. Like they literally have they just pretend to be good on your face and उनको सिर्फ अपने से लाइक अपने हिडन मोटिव से मतलब होता है. लाइक वो आपके फेस पे काफ़ी अच्छे रहेंगे बट पीठ पीछे दे जस्ट हैव बिग प्लान्स दैट आर जस्ट नॉट गुड फॉर यू. सो ऐसे लोगों से हमेशा हमेशा बच के रहें. नाउ सेकेंड काइंड ऑफ पीपल आर क्रिटिसाइजर्स. ओके, ये लोग वो होते हैं जो जिनको कोई भी चीज़ में संतुष्ट नहीं होते, जो हर चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं. लाइक ये अच्छा है तुम्हारा, ये अच्छा है तुम्हारा, ये बुरा है, यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट बैड, यू आर नॉट गुड पर्सन, यू आर नॉट गुड इन दिस. दे जस्ट criticize everything. They point out all the bad things, unnecessary things to you. Like such kind of people are just not satisfied with any single person. They just can't compliment anyone. They always they get happy vibes by criticizing others. They are like very very toxic, so you should completely avoid them. Criticizers just are not worth it. Okay, third kind of people are gossipers. ओके, सो गॉसिपर्स वो लोग होते हैं जो लाइक तुमको किसी और के बारे में ही बोलेंगे कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदी ऐसी है. देन दे विल टॉक टू अदर थर्ड पर्सन अबाउट यू कि ओके, शीतल इज़ नॉट गुड, शीतल इज़ बैड, शीतल इज़ लाइक दिस, शीतल इज़ लाइक दैट. ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनको गॉसिप करने में पता नहीं क्या मज़ा आता. लाइक
एक की बुराई दूसरे को करना, दूसरे की बुराई तीसरे को करना, एंड लाइक दैट, लाइक दे आर जस्ट लाइक काइंड ऑफ न्यूज रिपोर्टर्स, लाइक दे जस्ट spread bad vibes, and on that's really really bad. I just what to say. Okay, now let's jumping into the next kind of people. Fourth kind of people are self-absorbed. Okay, wow, what to say about them? They are just like, those kind of people who just always think about themselves. They are so self-absorbed, like उनको आगे पीछे और कुछ नहीं दिखता, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, लाइक कुछ भी हो सिर्फ मेरा अच्छा होना चाहिए. एंड दिस काइंड ऑफ thought process is extremely toxic. You should completely avoid such people. Like, I mean, who people can't see others happy, or just don't make others happy just for sake of themselves. These people are just not worth it. Okay, you should completely avoid them. Okay, now next kind of people, toxic people, is envious. Okay, envious are like those kind of people who are jealous. Envy means jealous, obviously. Those people are kind of people जो आपकी खुशी देख नहीं सकते. They are just like, यार ये मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे है, लाइक इसके पास ज़्यादा मेरे से पैसा क्यों है, लाइक इसके पास तो ये है, इसके पास तो वो है, मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है. एंड they just constantly throw that jealousy vibes at you, and जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं. लाइक those people are always busy in comparing themselves to others. Like they don't think that we should also work that hard, ताकि जो बंदा सामने है वो उस पोजीशन पे है, उसके काम की कितना उसने हार्ड वर्क किया तब जाके. दे जस्ट डोंट थिंक इन दैट थॉट प्रोसेस. दे जस्ट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग लाइक, ओके इसके पास मेरे से ज़्यादा क्यों है, वाई. दे जस्ट कांट see anyone succeeding in front of their eyes, and this is extremely toxic. So completely try to avoid such people in your life. Okay, now let's jump in the next toxic person, and that is needy people. Okay, this is kind of selfish people kind of vibe. Those people always thrive on need. Like if that person needs something from you, वो आपके पास आएंगे. अगर उनको कोई आपसे मतलब नहीं है, अगर आपसे कोई काम नहीं निकल रहा है, तो वो आपको बुलाएंगे भी नहीं. सो उन लोगों से काफ़ी सतर्क रहना चाहिए. मुझे ऐसे लोग बहुत मिले हैं मेरी लाइफ में. लाइक अगर आपका उसका काम ख़त्म हो गया तो तू क्या और तू कौन और मैं कौन, दैट काइंड ऑफ वाइब. एंड आई एम लाइक, what? Like, how can someone be so needy? Whatever. Like, then okay, now let's jump into the next kind of toxic person. Okay, next is temperamental. So temperamental are those kind of people जिनका मूड कॉन्स्टेंटली चेंज होता है. अब मैं इसको मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव में भी समझाऊंगी. लाइक बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको फ्रीक्वेंटली मूड स्विंग्स आते हैं क्योंकि उसका कोई मेडिकल रीज़न होता है. आइदर दे आर नॉट इमोशनली स्टेबल, आइदर they are anxious people, they are depressed. So you really need to take into consideration कि उस बंदे या बंदी की मेंटल स्टेट क्या है. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो they are just temperamental on unnecessary basis. Like you can really understand that they are doing it intentionally, and they just kill the vibe. And this is something very toxic trait, so you should try to avoid it. But if you know that person is having anxiety or depression, then that's completely different thing. You should treat them with more love. But people who just intentionally kill the vibe, they are extremely toxic. Okay, now let's jump into the next kind of toxic person. And the next kind of toxic person is liars. The people I avoid the most. I literally hate people who lie, and literally lie on a face. Like,
are you what are you thinking, like that person is that person opposite to you stupid or what? Like they can't see through your lies. So those kind of people are extremely not loyal, and they are dishonest. This kind of people just don't deserve your time. They literally lie for every single thing. I just hate lies, and I've came across so many people, including there were some really good friends of mine who just literally lie on my face, and they just make you what. That is always the reaction, like why do you lie? And there are many reasons for lying. Either they have hidden motives, or just they are just not good for you, and there can be many reasons why a person lies. So you should always avoid such toxic people as much as possible. Okay, now let's jump into the next kind of toxic person. Okay, next kind of toxic person is insecures. Okay, this kind of people have problem with themselves. Like either they are like not they just don't love self themselves enough, or maybe they are just insecure for every single thing. Like the person who is not secure, you understanding, like person who is not secure with themselves are kind of people who just throw insecurities at you. So if someone is not happy with themselves, they will literally throw bad vibes at you. So this is something that needs a lot of internal working. So you should completely avoid such toxic traits of insecurities. Completely avoid it. Okay, now last but not the least, last kind of toxic person is victims. Like victim people just don't take responsibility for any single thing. They always throw excuses. They always run out of the crime. They like crime तो नहीं बोलेंगे, but thing or anything they have done, situation से भाग रहे हैं, and किसी और को अपनी गलती का blame कर देना, and this kind of victim traits is extremely toxic. So you should completely avoid such people. Okay, so yeah guys, this were certain traits that are extremely toxic and extremely very bad for you. So avoid such people with toxic traits. But a disclaimer, like ऐसा जरूरी नहीं है कि वो टॉक्सिक ट्रेट्स दूसरों में भी हो. ऐसे बहुत टॉक्सिक ट्रेट्स हमारे में भी होते हैं. Unwantedly sometimes you do certain things that are just toxic. You should always self-reflect as well. So अगर आपको भी ध्यान देना चाहिए कि ओके इस सिचुएशन में आपकी भी गलती हो सकती है, या आपका भी सर्टेन बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है. सो लाइक आपको खुद को भी सुधारें, और ऐसी चीजें हो रही हैं तो उससे बचें. ठीक है, एंड दैट वाज द ओनली रीजन आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विथ यू पीपल, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है. एंड it's like you should always save yourself from toxic people, and always make sure that you're not being toxic to other people as well. Okay, so I hope you really like this video, and I hope that I help you a little bit. Okay, and if you really like this video, कि आपको क्या करना है. Please do hit like, share and subscribe. Okay, until then, see you next time. Bye.